Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. Today we will discuss about the basic rules of musharaka. As we already defined the term musharaka, which means shirakat dari or participation in business by two or more people. So what could be the possible rules of musharaka that make it a valid contract or valid participation in terms of Islamic Sharia law? So definitely the basic purpose of the musharaka is the profit earning in its broader side. So followings are the basic rules. I will just read them out for your convenience. The number one is the word persons as used in the definitions refer to both individuals and legal persons or corporate bodies, right? So person means either company or either individuals or any legal person. It is unanimously agreed that they should be free and of sound mind. Again, the same condition which we have discussed in any valid contract. Number three, minors, unless allowed by guardians and the insane, are incompetent to become the partner. They cannot be the partner of the musharaka deal. A man who is put under inhibition by a court due to any other reason is not competent to enter into a contract of partnership. So these lines explain are valid, are good enough explained in their own details. Number five, musharaka can be concluded with non-Muslims, excludes all those businesses which are not lawful in Islam, and those businesses may be run by some other people, but we cannot get into such kind of musharaka contract if that deal is based on invalid product or unlawful activities. Number six, majority of jurists says that capital invested by a partner should be in the form of liquid assets. This is much important. The purpose of this emphasis is to have the clarity, much more clarity in the start of the shirka contract. That is money or prevalent currency units, and its value should be known without any ambiguity. So just to avoid the ambiguity or confusion in the contract, it is recommended that the liquid asset should be used as capital invested by each partner. But again, this is not compulsion. Number seven, debt or non-existent commodity cannot become part of the partnership capital until it is received. तो पहले उसकी वसूली होगी, फिर उस रकम को दोबारा कंसिडर किया जा सकता है. डेट को डायरेक्टली शामिल करने से प्रॉब्लम्स और एम्बिग्विटीज़ क्रिएट होंगी. Number 8, in the case of limited companies, capital is given the form of equal units called shares, and this is possible in terms of joint stock company. Number 9 is the capital of the partners should be merged or commingled. दिस मीन्स के तमाम कैपिटल ऐसा नहीं मुमकिन कि आप अगर कुछ मिलकर एक बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो कोई पार्टनर कहे जी ये हिस्सा बिल्डिंग का मेरे नाम कर दें, या ये ऐसे होगा या वैसे होगा. एवरीथिंग शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट? So in the case of goods, the share of partners will be calculated in terms of their money value at the time of contract. Number 11, a person can become a partner of a running business, and again this is possible if we read out the point number 8 again. So equal forms of units in terms of shares, right? So this is again possible. Number 12, merger of various partnership firm is also possible. Number 13, parties to a contractual musharaka are agents of one another. I mean they will be considered as an agent. Number 14, if a partner purchases something for himself only, it is exclusively for him and not for the joint business. तो वो उसके अपने
ज़ाती मलकियत होगी, उसके अपने ज़ाती इस्तेमाल में रह सकेगा, उसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता वो कोई कि वो उससे भी बिज़नेस पे लगाए. नंबर 15 is all partners in a shirka have a right to take part in management of the joint business in the following transactions. So cash और credit sales हैं, rejection of defective goods हैं. तो जिस कारोबार के जितने भी मामलात हैं उसमें ये लोग शिरकत दारी और अपना किरदार अदा कर सकते हैं, इनको रोका नहीं जा सकता. Number 16, partners are not permitted to give out grants or loans unless all the partners have given their consent to such an action. तो एक कारोबार में एक शराकतदार अपने बिहाफ के ऊपर किसी को लोन दे नहीं सकता या कारोबार के लिए लोन नहीं ले सकता until unless के तमाम जो पार्टनर्स हैं वो एग्रीड हैं. और अगेन जो लोन लिया जा सकता है जिस फॉर्म में, वो इंटरेस्ट फ्री होना चाहिए. Number 17, the partners can also agree to appoint a manager other than from the partners and pay him a fixed remuneration, and this is a kind of treated as an expense of the shirka. Number 18, a partner can be appointed for any service required by the shirka on the basis of an independent employment contract and can also be dismissed from the service. तो किसी एक पार्टनर को उसकी एबिलिटी और स्किल्स की बुनियाद पर जॉब भी दी जा सकती है, लेकिन इसके बदले यकीनन वो अपनी स्किल्स प्रोवाइड करेगा और उसे उसके बदले सैलरी मिलेगी. लेकिन शराकत दारी अलग है. हाँ, अगर बाकी पार्टनर्स नहीं मुनासिब समझते उसे तो उसे डिसमिस भी किया जा सकता है सर्विस से और इसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं होगा. नंबर 19, पार्टनर इज़ वकील बट नॉट कफ़ील ऑफ द अदर पार्टनर्स. तो ये एक दूसरे के लिए वकील का काम करेंगे, ना कि कफ़ील का. नंबर 20, अ पार्टनर इज़ नॉट लायबल टू इंडेमनीफाई an outsider on behalf of another partner for a loss during such agency. Number 21, the ratio or the basis for sharing profit should be decided at the beginning of the partnership to avoid any kind of dispute. Number 22, profit should be allocated in percentages of net earnings, which means after deducting the operating cost and expenses and not in a sum of money. So ये बात बड़ी क्लियर है कि जब आप कारोबार के तमाम अखराजात निकाल देंगे तो फिर जो कुछ बचेगा उसकी परसेंटेज जो है वो एलोकेट होगी, यानी कि नेट अर्निंग्स की, राइट. सो देयर आर फ्यू पॉइंट्स एज वेल एंड आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं, बट अगेन दीज आर द रूल्स दैट मस्ट बी फॉलोड. Number 23, it is not necessary that agreement for sharing profit should be proportionate to capital contribution. तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ मुख्तलिफ सिचुएशंस में ये थोड़ी बहुत वेरी कर सकता है, लेकिन अगेन ये म्यूचुअल कॉन्सेंट होगा. Number 24, a sleeping partner cannot share the profit more than the percentage of his capital. उससे ज़्यादा नहीं ले सकता. If a partner did not stipulate that he would be a sleeping partner, he is entitled to get an additional profit share over his percentage of contribution to the capital, even if he did not work. So this means कि sleeping partner को इस तरह की शर्त नहीं रख सकता कि उसे ज़्यादा शेयर दिया जाए क्योंकि वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा. Number 26, a partner may surrender a part of his profit to another partner, और अगेन ये उसकी अपनी पर्सनल विल के साथ हो सकता है. It is permissible to distribute a provisional profit subject to the final settlement after actual or constructive liquidation. तो यकीनन अगर एक साल बाद हिसाब मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होती हैं तो उससे पहले जो है वो प्रोविजनल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है कि ताकि वो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर लें, लेकिन बहरहाल इसमें कोशिश यही होगी कि उतना ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाए जो एक्चुअल होगा. Number 28, if the subject matter of shirka is a leased asset, the rental amount distributed to the partners as per their share. Number 29, it is permissible for partners to decide not to distribute a portion of profit for the purpose of creation of various services, and it may vary for certain time periods. तो ये अगर mutually partners agreed है कि ठीक है जनाब अभी हमें बिज़नेस को ग्रो करना है तो पहले 1 साल या 2 साल हम प्रॉफिट शेयर नहीं करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, तो ऐसी बात हो सकती है, लेकिन अगेन म्यूचुअल कॉन्सेंट के साथ. एंड नंबर 30 एंड द लास्ट वन इज़ ऑल पार्टनर्स विल हैव टू शेयर द लॉस इन प्रोपोर्शन टू देयर इन्वेस्टमेंट. सो दीज आर द सर्टेन रूल्स बिहाइंड द मुशारका काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. आई होप यू पीपल गेट द आइडिया.
Thank you so much. Jazakallah.